these variables x and y with respect to u. Chalo, so we'll start the sum as well. Since x is equal to x is equal to, it is the root of 1 plus u square. Next time, differentiating x with respect to u. Differentiating x with respect to u. Next step, applying the operator d by du on both the sides. Next step, therefore, derivative of x with respect to u is dx upon du which is equal to, चल भाई फटाफट सब लोग बड़ा मुझे आंसर दो, रूट 1 plus u square बड़ा root 1 plus u square, it is in the form of root x. Derivative of root x is 1 upon 2 root x. फॉर्मूला था u के लिए, यूज किया किसी और के लिए, भरना पड़ेगा पेनल्टी. Derivative of root of 1 plus u square, answer is 1 upon 2 root 1 plus u square into derivative of into d by du of 1 plus u square. चलो बड़ा फटाफट inside the bracket बड़ा there are total two terms, we need to apply the operator बड़ा to both the terms. फटाफट दोनों को अप्लाई करो बड़ा ऑपरेटर d by du. therefore therefore dx by du which is equal to 1 upon 2 root 1 upon 2 root 1 plus u square inside the bracket 1 is a constant का derivative 0, u square का derivative 2u. But what is 0 plus 2u? 2u. What is 1 into 2u? Answer is 2u. You will get the answer as therefore dx upon du. Answer is 2u upon 2 into the root of 1 plus u square. Here the terms like this 2 and this 2 will get cancelled. but 2 वाला term will get cancelled. तो देख अपना तो आंसर बड़ा रेडी है. therefore dx upon du dx upon du which will be equal to u upon but देखो root of u upon but it is a root of 1 plus u square. Number this as 1. चल next y is equal to y is equal to
log 1 plus u square. Y is equal to log 1 plus u square. Next step, differentiating y with respect to u. Keep writing up, ये सब चीजें लिखना है, otherwise you will be losing the marks. Next step, therefore, derivative of y with respect to u. Answer is dy upon du. And now there comes the term log 1 plus u square. But log 1 plus u square, it is in the form of log x. Derivative of log x is 1 upon x. So derivative of log 1 plus u square, answer is 1 upon 1 plus u square into a derivative of into a d by du of 1 plus u square. But inside the bracket, there are total two terms. We need to apply the operator to both the terms. You will get your answer to be as dy upon du, which is equal to 1 upon 1 plus u square. 1 is a constant. Constant का डेरिवेटिव is 0. U square का डेरिवेटिव is 2u. So by you will get your answer to be as. Therefore, तो भाई फटाफट मुझे आंसर बताओ. Therefore, dy upon du dy upon du 0 plus 2u, answer is 2u upon 1 plus u square. Number this as 2. अब ध्यान से चेक कर लो बड़ा, अपने पास क्या क्या है सब में. dy upon du and बड़ा dx upon du. By knowing dy upon du and dx upon du, चलो बच्चा लोग हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मुझे बताओ फटाफट. dy upon dx answer is dy upon du the whole upon dx upon du. बराबर है. तो वेरी गुड बेटा, वी कैन फाइंड dy upon dx. फटाफट बच्चा लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो और मुझे आंसर दो बेटा. dy upon du आंसर विल बी इक्वल टू 2u upon 1 plus u square dx upon du मीन्स. चलो dx upon du का आंसर बताओ मुझे बच्चा लोग, क्या था dx upon du. It was u upon रूट ऑफ 1 plus u square. तो ये देख ले बड़ा, यहाँ पे ये जो टर्म्स है बड़ा, टर्म्स लाइक u
u will get cancel. Don't forget to write down the reason. ये वैल्यू तुम्हें जो मिला है वो कहां से मिला है बेटा? फ्रॉम वन एंड टू। बेटा ये जो टर्म है रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर विच इज गेटिंग बेटा डिवाइड, यही टर्म अगर नीचे से ऊपर आ जाए बेटा तो पढ़ाई इट के विल लिए गेट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट नीचे से तैयारी का ऊपर आ साथ। जाए बेटा तो इट विल गेट मल्टीप्लाई बेटा। अगर ऐसी बात है तो देख भाई अपना आंसर तो रेडी है बेटा। dy अपॉन dx बेटा आंसर विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रूट वन प्लस यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर। चलो देख लिया बेटा पूरा सम इसी था। नेक्स्ट सम नंबर 3। बेटा वी वांट टू डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x। Question number 3 बेटा we want to differentiate 5 raised to x with respect to log x। बेटा mark this sum very important बेटा, highly expected बेटा in the board exam। differentiate 5 raised to x with respect to log x। चल बेटा अब ध्यान दो फटाफट। बेटा अभी तक हम लोग ने जितने भी सम सॉल्व किए बेटा वो सब में हम लोग ने क्या सीखा है? हाउ टू डिफरेंशिएट y with respect to x, how to differentiate y with respect to u, how to differentiate x with respect to u, how to differentiate x and y with respect to t। ये सब हम लोग ने सीखा है मैडम। बट हाउ टू डिफरेंशिएट वन टर्म विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्म, क्या ये हम लोग ने कभी सीखा है मैडम? हाउ टू डिफरेंशिएट वन टर्म विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्म, ये कभी सीखा है मैडम? नहीं, ऐसा तो हम लोग ने कभी सीखा ही नहीं है। और ना ही हम लोग के पास ऐसे कोई बड़े डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। तो जब भी ऐसा कोई सम आए ना मैडम जिसमें हमें वन टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्म, ऐसे टाइप के सम को बड़ा हमेशा सॉल्व करने की ट्राई करो बड़ा बाय मेकिंग अजम्पशन बड़ा बाय मेकिंग अजम्पशन।
अच्छा भाई, what is that assumption? Let u be equal to बड़ा 5 raised to x and v be equal to log x. What is u is equal to 5 raised to x and what is v is equal to log x. तो इसका मतलब बड़ा मुझे इनडायरेक्टली पता चल गया कि if I want to differentiate 5 raised to x with respect to log x, that means indirectly बड़ा I want to differentiate बड़ा u with respect to बड़ा v. I want to differentiate beta u with respect to v. But I want to differentiate u with respect to v. That means what is the derivative of u with respect to v? What I want to find? What is my aim beta is to find? But my aim is to find du upon dv. Chalo, very good, madam. So, beta, in this sum, both the variables, beta, u and v, beta, they are being expressed beta, in the terms of third variable. The third variable is beta x. So this time beta x is a parameter. This time beta x is a parameter. Since u is equal to 5 raised to x. Chalo beta, next step. Differentiating u with respect to x. Beta. Differentiating u with respect to x. अब भाई मुझे ये बताओ, when you will differentiate beta u with respect to x, once again beta who will be the operator? D by dx. Applying the operator beta d by dx on both the sides. So on that basis beta you will get the answer as the derivative of u with respect to x is du upon dx, which is equal to, चलो फटाफट start करो beta 5 raised to x, it is in the form of a raised to x. Derivative of beta a raised to x, answer is a raised to x into log a. So derivative of beta 5 raised to x, answer is 5 raised to x into log 5. Number this as 1. Next line, since v is equal to, since v is equal to log x, but chalo v is equal to log x. Next line, therefore differentiating v with respect to x, applying the operator d by dx on both the sides. Therefore dv upon dx, answer it is equal to 1 upon x. Number this as 2. What chalo, what is your aim? What is your aim to find du upon dv? अब ये देखो for finding du upon dv, मैंने तो तुम लोग को कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया है, बट मैंने तुम लोग को ये सिखाया हुआ है कि हाउ टू क्रिएट द फॉर्मूला. तुम्हारे पास दो टर्म्स है, वन इज du अपॉन dx एंड अदर वन इज dv अपॉन dx. भाई मैंने ये तुम लोग को फॉर्मूला नहीं सिखाया बोल, तो भी तुम लोग मुझे आंसर दे सकते हो कि हाउ टू फाइंड du अपॉन dv.
एटलीस्ट बेटा यू कैन ट्राई कर सकते हो। अरे वाह, वेरी गुड बेटा दृष्टि, वेरी नाइस बेटा, परफेक्ट। du अपॉन dv बेटा आंसर विल बी इक्वल टू, it will be du upon dx अपॉन बेटा dv अपॉन dx। अच्छा, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हम लोग ये वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो यू विल गेट योर आंसर टू बी एज 5 raised to x into log 5 upon 1 by x। रीजन बेटा यू कैन राइट डाउन फ्रॉम 1 and 2। बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि x वाला जो टर्म है बेटा x, इट इज गेटिंग डिवाइड बेटा। तो जो x बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यही टर्म ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। You will get your final answer to be as a बेटा। Therefore, du upon dv आंसर बेटा इट विल बी इक्वल टू 5 raised to x into बेटा log 5 multiplied by x, है ना बेटा? एज कंपेयर टू ऑल अदर सम, ये सम तुम लोग को ज्यादा इजी लगा कि नहीं? सच बोल मुझे। और ऐसे टाइप के जो सम्स है मैडम, वो पास्ट बोर्ड एग्जाम्स में मैडम नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए सम्स है मैडम।